Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am here with your new lecture number 24. It is about chapter number 7 of Educational Psychology, DUC 3112. Today we are going to start our new chapter, which is Classroom Teaching. How psychology is applied in day-to-day classroom teaching and what are the approaches those are helpful to guide us in classroom teaching. The agenda of today's lecture include the comparison of individual instruction versus group instruction, open and humanistic approaches towards teaching, planning and management, seat work and recitation, and impact of culture and community. Let's start and see these one by one. Individual instruction versus group instruction. इसके नाम से ही जाहिर है कि जब हम ग्रुप में लोगों को पढ़ाएंगे तो वो हमारी ग्रुप इंस्ट्रक्शन है. वी शेयर सम कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, वेयर एज वेन एवर वी प्लान इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, इट मीन्स वी आर प्लानिंग and targeting the needs of the individuals who may be suffering from some disability or they are unique in their intelligence levels. So the individuals can be of different types. Let's see what does literature says. Group instruction. It is flexible. Groups are at the heart of the differentiated instruction. The same students are not in the same group for every activity or assignment. Each student is moved around according to his or her abilities. Teachers design their lesson around the needs of each group. It means the focus of group instruction is about the varied needs of the people who are part of that group. Whereas individualized instruction, it focuses on the needs of the individual student. Teaching is specific and targets one need at one time. हर बच्चे के इंडिविजुअल स्टूडेंट की नीड्स के हवाले से स्पेसिफिक टीचिंग का नाम इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है. Some students who receive individualized instruction need teachers to help them understand and learn. Other students using the same teaching method can skip topics they already know and go on to the advanced information. So अगर हम इस कंपैरिजन को गौर से देखें तो ग्रुप इंस्ट्रक्शन में हर बच्चे की एबिलिटी, स्किल और नॉलेज का ख्याल रखना पड़ता है. इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन में हम हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को डील कर रहे हैं, तो इट इज़ मोर ऑफ टीचिंग सच एज अ स्पेसिफिक और अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी और सम डिफरेंट कैलिबर. अगर कुछ स्टूडेंट को हम देखते हैं कि उन्हें ये टॉपिक आते हैं तो वो स्किप करके आगे भी बढ़ा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स. मोर वी सी इन ग्रुप इंस्ट्रक्शन देयर इज एन एग्जांपल. वन ग्रुप माइट राइट अ पैराग्राफ after listening to a reading, while another group puts a skit on it. The other one might create a poster or an art project to show that what they have learned. Students may read books on topics they are closely matched to their reading levels. Whereas group instruction means special education is a great example of individualized instruction. Students who receive special education services have an individualized education program. Through an IPE, which is individualized education program, the school can meet the individual needs and provide just for them. जब हम किसी खास या स्पेशल एजुकेशन का एहतमाम करेंगे तो वो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है हर एक की नीड्स के अकॉर्डिंग. जबकि ग्रुप इंस्ट्रक्शन में 2 या 3 डिफरेंट एबिलिटी वाले लोग मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे या उससे भी ज़्यादा और उनको इकट्ठे पढ़ाया जाएगा. नंबर सेकंड टॉपिक इज ओपन एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस टुवर्ड्स टीचिंग. The idea of open approach is defined as a method of teaching approach on which the activities of interaction between mathematics and students are open to varied problem solving approaches. The aim of open teaching approach is to foster both creative activities of the students
and their mathematical thinking in problem solving simultaneously. In other words, both the activities of students and their mathematical thinking must be carried out to fullest extent. ओपन अप्रोच का मतलब ये है कि आपने ऐसी टेक्निक और मेथड इस्तेमाल करके एक्टिविटीज़ करवानी है बच्चों को जिसमें वो दो या क्लोजली रिलेटेड एबिलिटीज़ को इकट्ठे साथ साथ देख सकें. इधर एग्जांपल दी गई है प्रॉब्लम सॉल्विंग की और मैथमेटिकल थिंकिंग की. Humanism is a school of thought that believes that human beings are different from other species and possess capabilities not found in animals. So humanists give primacy to the study of human needs and their interest. ये स्कूल ऑफ थॉट कहता ही है कि इंसान एक यूनिक बीइंग है, एक ऐसी स्पीशी है जिसके अंदर डिफरेंट कैपेबिलिटीज हैं जो उसको एनिमल से अलग करती हैं. इट इज डिफाइंड एज a naturalistic philosophy that rejects all supernaturalism and relies primarily upon reason and science, democracy and human compassion. Humanistic teaching approach is based on the principle that the whole being, emotional and social, needs to be engaged in learning, not just the mind. यानी जब हमने अपने ह्यूमन बींग्स को टीच करना है तो सिर्फ उनके माइंड या कॉग्निटिव एबिलिटी को टारगेट नहीं करना, बल्कि द इमोशनल एंड सोशल नीड्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो नीड कंसंट्रेशन. द पर्पस ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन इज टू प्रोवाइड अ फाउंडेशन for personal growth and development so that learning will continue throughout life in a self-directed manner. So open learning में हम हर तरह की स्किल या मिक्स ऑफ स्किल्स एकदम पढ़ाते हैं. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हम वो ये केयर करते हैं कि सिर्फ कॉग्निशन या माइंड लेवल का ख्याल नहीं करना, बल्कि इंडिविजुअल या ह्यूमन बींग्स के सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट का भी ख्याल करना है. नंबर थर्ड पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज planning and management. Planning means that you make a layout and plan something prior to the action, and managing means to execute that planning. These terms planning and management, the classroom is very important. All the teaching process is based on powerful management and strong planning. Here are some tips for planning and management of your classroom. So we see these one by one. Number one, create learning stations. Provide different types of content by setting up learning stations, divided sections of your classroom through which groups of students rotate. You can facilitate this with a flexible seating plan. बजाय इसके कि डेली एक तरह से बैठाया जाए, हम लर्निंग स्टेशंस क्लास में ही डिफरेंट पोर्शंस में बना सकते हैं. ईच स्टेशन शुड यूज अ यूनिक मेथड ऑफ टीचिंग और स्किल और कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू योर लेसन. एक ही टॉपिक की डिफरेंट डायमेंशंस बच्चों में बांट दी जाए और उनको डिफरेंट पोर्शंस में बिठा दिया जाए. फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स कैन रोटेट बिटवीन स्टेशंस दैट इन्वॉल्व वॉचिंग अ वीडियो, क्रिएटिंग आर्ट वर्क, रीडिंग एन आर्टिकल, कंप्लीटिंग पजल्स. ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं. टॉपिक चाहे सेम रहे लेकिन पढ़ाने का तरीका हर एक में डिफरेंट होगा. नंबर टू, यूज टास्क कार्ड्स, जिसको हम फ्लैश कार्ड्स भी बोलते हैं, या डिफरेंट तरह के कार्ड्स हैं जिनकी मदद से लर्निंग एक्सेलरेट होती है. जस्ट लाइक लर्निंग स्टेशंस, टास्क कार्ड अलाउ यू टू गिव स्टूडेंट्स अ रेंज ऑफ कंटेंट. Answering task card can also be a small group activity, adding variety to the classes that normally focus on solo और लार्ज ग्रुप लर्निंग. बजाय इसके क्या कि लेक्चर मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाए और एंड पे क्वेश्चन किए जाएं, अगर हम टास्क कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो डिफरेंट तरह की पजल्स और क्विज लिख के लेके जाएंगे, जिससे हम ग्रुप एक्टिविटी करके बच्चों की अटेंशन को मोटिवेट कर सकते हैं. इंटरव्यू स्टूडेंट्स, इसके थ्रू भी क्लासरूम मैनेज होती है. आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट लर्निंग एंड स्टडिंग स्टाइल्स कैन हेल्प यू पिन पॉइंट द काइंड्स ऑफ कंटेंट that will meet your class needs. While running learning stations or a large group activity, pull each student aside for a few minutes and ask about their favorite types of lessons, favorite in-class activities, and the projects they are most proud of.
In this way, students can be motivated and their interview will make them a feeling that they are important and teacher is planning their learning according to the interest of their students. Number 4 is target different senses within lessons. It means a lesson should resonate with more students if it targets visual, tactile, auditory and kinesthetic senses instead of only one. बजाय इसके कि सिर्फ एक स्किल इस्तेमाल हो के स्टूडेंट देखता जा रहा है और सामने पावर पॉइंट चलती जा रही है, उसमें ही हमें बाकी तमाम चीज़ें, बाकी सेंसेस भी शामिल करनी चाहिए. When applicable, appeal to a range of learning styles by playing videos, using infographics, providing audiobooks, getting students to act out a scene, incorporating charts and illustrations within text, giving both spoken and written directions to the task. These can be different types of activities that can engage a variety of senses to achieve a target. Share your own strengths and weaknesses. Whenever a teacher experience is shared within the classroom, it means that teacher is also a human being, and it is a general phenomenon that we face certain difficulties. It motivates and manages the problems of the students and they become friendly towards the teacher and explain and share their problems. To familiarize students with the idea of differentiated learning, you may find it beneficial to explain that not everyone builds skill and possesses information the same way. Talking about your own strength and weakness is in one way of doing this. Explain on a personal level how you study and review lessons, share tactics that do and don't work for you, encouraging students to try them. Because teaching differentiated learning is not an easy task, you can take help by telling them your strengths and weaknesses. Number 6 is implement reflection and goal setting exercises. It means reflection means the students will give you some feedback or you will give some feedback to the performance of the student. And goal setting exercises means you will put some target in front of the students and they are likely to achieve that target. An extension of journaling, having students reflect on important lessons and set goals for further learning at predetermined points of the year. During these points, ask students to write about their favorite topics as well as the most interesting concepts and information they have learned. They should also identify skills to improve and topics to explore. Based on the results, you can target lessons to help meet these goals. Number 7. Group students with similar learning styles. In this way, you can take help from your fellow people that how they are learning. Heterogeneous grouping is a common practice, but grouping students based on similar learning style can encourage collaboration through common work and thinking practices. जो लोग एक तरीके से काम करते हैं उनका एक ग्रुप बना दें. This is not to be confused with grouping student based on a similar level of ability or understanding. इसका ताल्लुक ये नहीं है कि जिन लोगों को एक टॉपिक पसंद आ रहा है वो सारे एक ग्रुप बना लें. इसका ताल्लुक ये द स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल्स शुड मैच विद ईच अदर. Now we will see that what should be the seat work and recitation. How differentiated learning can be accelerated with seat work. Seat work means it is defined as a period of time during a lesson when students work independently on assigned task either alone or in small group. बैठ के क्लास में जो वो क्लास वर्क कर रहे होते हैं लेसन के दौरान वो सारा उनका सीट वर्क है, चाहे वो अकेले करें या ग्रुप में. The type of talk is private, but there are instances of public talk when the teacher makes announcement to the whole class. The other method is recitation. It is a direct teacher-centered approach in which the teacher asks specific short answer questions with a specific answer in mind. Incorrect answers are usually corrected by the teacher or by other students. Simply, we can ask question
to the students and they can be corrected by write a response to the other student. Last point of this lecture is impact of culture and community. It means cultural tendencies impact the way children practice in education. To engage students effectively in the learning process, teacher must know their students and their academic abilities individually, rather than relying on racial or ethnic stereotypes or prior experience with other students of similar background. इस बात का सिंपल ये मतलब नहीं है कि आप कल्चर और कम्युनिटी का ख्याल रखें. मोर देन दैट, टीचर अपने पुराने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे जो रेशियल हैं या एथनिक स्टीरियोटाइप्स हैं, एथनिक स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है नस्ली बुनियादों पे हम अटैच कर दें कि फलानी कास्ट का बच्चा ऐसा ही होता है, ये वाले बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, ये वाले बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव हैं, या रेशियल बुनियादों पर किसी को कमतर या ज़्यादा समझना. टीचर इन तमाम स्टीरियोटाइप से दूर रहे और प्रायर एक्सपीरियंसेस से भी दूर रहे. हर इंडिविजुअल को यूनिक ले, ऑल्दो ईच इंडिविजुअल हैज़ अ लिंक विद हिज और हर कल्चर एंड कम्युनिटी, but it does not mean that we relate the ability of that individual with that particular culture. So टीचर को अनबाइस्ड रहते हुए बच्चों की एजुकेशन के अंदर पार्टिसिपेशन करवानी है और ये लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना है. इम्पैक्ट ऑफ कल्चर एंड कम्युनिटी में हम फर्दर देखते हैं कि ये कैसे रेलिवेंट है करिकुलम के साथ. कल्चरली रेलिवेंट करिकुलम कैसा होता है? करिकुलम is the what of education. It's simply the destination where we want to move on. It is crucial to academic performance and essential to the culturally responsive pedagogy. Even the most standard curriculum decides whose history is worthy of study, whose books are worthy of reading, which curriculum and text selection that includes merit, voices and multiple ways of knowing, experiencing and understanding life can help students to find and value their own voices, histories and cultures. So simply it is a responsible act of choosing a relevant curriculum. Further, honoring home languages. The basic type यहाँ जो एक point बहुत elaborate होने की ज़रूरत है, that is simply language proficiency is not a symbol of your intelligence. जो हम डिबेट करते हैं कि हमारी बुक्स किस जुबान में होनी चाहिए, मोड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग क्या होना चाहिए, उसकी बजाय अगर हमें देखें व्हाट कॉन्सेप्ट शुड बी मास्टर्ड इन ड्यू टाइम, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. टीचर्स आर ऑफन एज यंग इमिग्रेंट्स फर्स्ट रेगुलर ongoing contact with someone outside their home community and culture. It is a relationship that can provide the emotional scaffolding necessary to cross the linguistic and cultural divide between country or of region and country of residency. हर जगह की होम लैंग्वेज को ऑनर करें और हर एक को ड्यू रिस्पेक्ट दें. स्कैफोल्डिंग यहाँ क्या मतलब है? इमोशनल स्कैफोल्डिंग का मतलब है यू विल ब्रिज, यू will try to remove the gap between two different languages and cultures. Next is the fact that culture guides socialization. It implies that important influences in academic achievement, such as parents' attitude about learning, teacher expectation and culture construals of schooling, will differentially dedicate how students understand their educational experience. We cannot deny that culture and community is having an impact. So, under this lecture, we have seen